method of preparation है, then you have the physical properties, and then you have the chemical properties, right? You have the chemical properties. Method of preparation, physical properties, chemical properties. Okay. उससे पहले what type of chloride is this? Allyl है या vinyl है? Tell me. This is allyl chloride or vinyl chloride? वो देखिए क्या है, याद रखिए ये सब चीजें, ठीक है? छोटी सी चीज रहती है, सब आप लोग नहीं याद रखेंगे। सेंड द आंसर इन चैट। अलाइल और विनाइल। कितने लोगों ने आंसर किया है? 3-4 लोगों ने। बाकी लोग आंसर करें प्लीज। दिस इज अलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। बाकी लोग आंसर करें। व्हाट हैपेंड? फातिमा ने किया है, सारा ने किया है, हनीफा, ओके फाइन, अब्दुल, ठीक है। अब देख लीजिए, दिस इज नोट्स में देखिए। अब हालोल्किन हालोरीन्स के नोट्स में देखिए, सही है या गलत है आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से, दिस इज अलाइल, ठीक है, दिस इज अलाइल। विनाइल क्या होगा? क्लोरीन। याद रखेंगे, वी कैसा होता है आपके पास? वी इज लाइक दिस, है ना, उल्टा वी। और यहीं पे आपके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड, और यहीं पे आपके पास क्लोरीन। ठीक है, दिस इज विनाइल। याद रहेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोबेंजीन, बताइए। और दूसरा चीज ये भी, दिस इज हैलोअरीन और दिस इज हैलोअल्केन। ये बताइए आप, ए बी, द स्ट्रक्चर इज व्हाट? हैलोअल्केन और हैलोअरीन। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ना गलती हो रही है। ओके, देखिए, दिस इज नॉट हैलोअरीन। फातिमा, केंजा, हनीफा ने बी बोला, फिर सारा, ठीक है, दिस इज नॉट हैलोअरीन। ओके, हाँ, नवाल करेक्ट। क्या हो गया बच्चों आप लोगों को? आप लोग प्लीज हैलोअल्केन हैलोअरीन का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, प्लीज रिवाइज दैट लेक्चर। दिस इज नॉट हैलोअरीन। हैलोअरीन के लिए the halogen should be directly attached on the benzene ring. Okay, the halogen should be directly attached on the benzene ring. This is what? It is a haloalkane. Why? Bromine is attached with what carbon atom? sp3. और ये carbon atom क्या? This is not a carbon atom of a ring. It is not a aromatic carbon atom. ठीक है, aromatic compound का carbon atom नहीं है ये. And this is also what? This is benzyl bromide, not bromobenzene. Bromobenzene ये है आपके पास. Okay, this is bromobenzene and this is this part here. इतने part को क्या बोलते? This is benzyl. Okay, this part is what? कितना वाटा है? Benzyl. Okay, Abdurrahman, very good. You have answered both of these things, I think, correctly. चलिए, let's move on. एक nomenclature कर लेते हैं.
चलिए, send the answer in chat. Name of this molecule. हनीफा आपका सही नहीं है. समायरा, हिश्मा, I think both of you are correct. Yeah, both of you are correct. Yeah, correct. Okay. So first of all, what is the functional group? Functional group is nothing. It is E. What is the unsaturation? Unsaturation is the double bond. That is why it will be En. And then you have the parent. Parent will be both the carbon atoms of the double bond will be included in the parent. So it will be 1, 2, and then this is 3. Right? Please ध्यान रखिएगा. This is not a CH3. This is just a bond between carbon and bromine. ठीक है. अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं. This is just a bond between carbon and bromine. This is not another carbon atom. We have only 3 carbons here. Parent is prop. Then the substituent, whatever remains after the identification of puff, is the substituent. So we have Br and we have CS3. So you have CS3 in the second carbon atom. So this will be 2-methyl. And bromine in the third carbon atom, this will be 3-bromo. When we write the name of the structure, we use the alphabetical order for substituent. So substituent when you have 3-bromo first of all, because starting with B, so you'll have 3-bromo, 2-methyl, propene, or you can write prop 1-ene. 1-ene, or the same thing with propane. Clear? Yes or no, please tell me. Is this clear? एक आप और एग्जांपल लिख लीजिए. इसमें कभी कभी बच्चों को मिस्टेक हो जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस CH2Cl, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास दिस इज गोइंग टू बी योर द मेन चेन. इसी कार्बन पे आपके पास क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है. इसी कार्बन पे आपके पास दिस, व्हेन बेंजीन रिंग इज एज सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नोन एज फिनाइल. ठीक है. दिस इज फिनाइल एंड दिस इज व्हाट? क्लोरो. तो इसको बोलेंगे क्लोरो फिनाइल बेंजीन. नहीं, क्लोरोफिनाइल मीथेन. मीथेन. ठीक है. क्लोरोफिनाइल मीथेन. And is there any good other example? चलिए, बाकी आप लोग तो कर लीजिएगा. I hope so. Then
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी हैव द बॉन्ड लेंथ्स. ठीक है, वी हैव द बॉन्ड लेंथ्स, यानी कि we have different types of bond between carbon and halogen. And if I talk about the bond length, then CF bond is shortest, followed by CCl, followed by CBr, followed by CI. Then we talk about bond enthalpies, या फिर उसको bond strength भी बोल सकते हैं ना, bond enthalpy या फिर bond strength. Bond strength का मतलब how strong a particular bond is, and bond enthalpy means the amount of energy required to break the bond. So दोनों they are directly proportional. Bond strength जितना ज्यादा होगा bond enthalpy उतनी ज्यादा high होगी. So CF bond की अगर हम बात करें, CF bond is what? It is the strongest because both of them are what? In the second period. तो 2p का जो overlapping होगा that will be very good. Followed by CCl, followed by CBr, and the weakest bond is of CI. ठीक है, weakest bond किसका होता है? CI का होता है. So ध्यान रखिएगा जरा. Now one more thing is dipole moment की अगर हम बात करें, तो dipole moment तो CI का ज्यादा होता है because of the larger bond length and all. Okay. Next is method of preparation. Method of preparation में अगर आपको याद हो alcohol के साथ, so you have alcohol. We have plenty of method of preparation from alcohol, लेकिन उसमें से आपको किसका याद करना है? सबसे एक जो सबसे important है that is from SOCl2. ठीक है, from SOCl2. This is ROH. यहाँ पे मिलेगा आपको क्या? RCl. Then similarly you have what? एक another important one is HCl in the presence of ZnCl2. What is this known as? Tell me. ये कौन सा reagent होता है? HCl plus Zn. Lucas reagent. Lucas reagent में आपको क्या मिलता है? You will also get RCl. और यहाँ पे जो 3 degree होता है that is fasted, followed by 2 degree and then followed by 1 degree. Correct? Yes or no? Please tell me. ठीक है, याद रहेगा? Yes or no? Yes. ठीक है. Similarly आपके पास क्या होगा? There is one reaction with HI. In the HI के साथ क्या मिलेगा आपको? You will get iodide. Okay. अच्छा, what else? Then you have PCl3. phosphorus वाले reagents होते हैं, right? Phosphorus वाले reagents से you will get RCl, RBI, RBr and RI also. ठीक है, जो important था वो हमने यहाँ पे आपको लिखा दिया. ठीक है, HCl, ZnCl2, SOCl2. तो these things are important. SOCl2 क्यों important है? Because by the byproducts are gaseous and escape easily. ठीक है, so you don't need any filtration and all. Important point about all the method of preparation of alcohol, we cannot prepare haloarine from this method, from alcohols, from the above methods, because the carbon oxygen bond in phenol is partial double bond due to resonance. ठीक है, इस partial double bond due to resonance. Next आपके पास जो important है that is from hydrocarbon. Second is from hydrocarbon. Free radical hydrogenation, free radical halogenation, free radical. हाँ, कुछ लिखना है आपको? I was writing it. लास्ट में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलेगा, या फिर अभी आप लिखिएगा? So there's just like 2 words remaining. Okay, sir. ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजन. सबसे पहली बात, नॉट प्रेफर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज इट गिव्स. बताइए क्या? as it gives, free radical halogenation is not a preferred method of preparation of haloalkane because, कौन बताएगा? किसने रिवाइज किया हुआ है? Because it gives, क्या होता है? देखिए, यहाँ let us suppose CH4. आपने क्या? Cl2 और साथ में क्या चाहिए आपको? Light चाहिए. You need also light. So you will get CH3Cl and there will be chlorine also. अब chlorine या तो
क्लोरीन के पास दो ऑप्शन है, देयर आर रिमेनिंग क्लोरीन्स एंड इट हैज ऑप्शन टू रिएक्ट विद CH4, सो इट विल फॉर्म CH3Cl. इफ इट रिएक्ट्स विद CH3Cl देन इट विल फॉर्म CH2Cl2. फिर से इस क्लोरीन के पास क्या है, फिर से आपके पास इट कैन आइदर देयर विल बी रिमेनिंग क्लोरीन्स और आपके पास CH2Cl2 भी है. अगर कोई क्लोरीन CH2Cl2 के साथ टकरा गया then it is going to form CHCl3. Then further on, what is going to happen on chlorination? You can also form CCl4. So you are going to form 1, 2, 3, 4 different types of product. Mixture ban jayega sara, hai na? It is not a method, preferred method, because it gives mixture of haloalkane, which is difficult to separate. सही है, which is difficult to separate. याद आया कि नहीं याद आया? हाँ जी बताएं. यस सर. याद आया ना? ठीक है. इसमें से आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ क्या था सवाल को आसानी से लिखते हैं, C5H12. ठीक है, यू विल ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C5H12 एंड इसका हैलोजिनेशन कराइएगा. ठीक है, यू विल डू मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक बार सीएल लगाना है आपको. तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स. सो 5 कार्बन एटम्स में कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं? हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय free radical halogenation of N-pentane Cl2H9. यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? this carbon is same, these two carbons are same, and this is one another carbon. तो आपके पास in total कितने टाइप से कार्बन है? You have only 3 types of carbon, so you will get 3 different products. एक आप क्लोरीन यहाँ पे लगा दीजिए, plus you will get a chlorine in which you will have the chlorine the second carbon atom, और एक होगा जो आपको थर्ड कार्बन आटम में क्लोरीन लग जाएगा. कुछ याद आ रहा है आप लोग को? हाँ याद है, प्लीज बताएं. वी हैव डन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, यस और नो? जी ठीक है ना, किया हम लोगों ने इस तरह का सवाल. ओके, सो रिमेंबर दीस थिंग्स. नाउ आल्सो हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. मान लीजिए अगर आपके पास कोई एल्केन है, ओके, इफ यू हैव एल्केन, हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर. यू फॉर एग्जांपल इफ यू हैव n कार्बन एटम्स, आपके पास कितने एटम्स हैं? यू हैव n कार्बन एटम्स. फर्स्ट आइसोमर जो बनेगा, all n carbons in straight chain, no branch. सेकेंड में n-1 carbon in chain, in straight chain, and 1 branch. ठीक है, and 1 branch. For example, you have 1 2 3 4 5 6 carbon atoms. ठीक है, उन्होंने कितना ले लिया? You have taken 6 carbon atoms. तो ये एक आइसोमर हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे. 1 2 3 4 5. 5 में अब आप ध्यान रखिएगा, 1 ब्रांच ऑन सेकेंड लास्ट और सेकेंड कार्बन एटम. ठीक है, यहाँ पे आप मन डाल दीजिएगा, ये तो ये पुराना वही वाला बन जाएगा. ठीक है, यू हैव डन व्हाट? 5 कार्बन आटम लिया आपने, 6 कार्बन आटम आप कहाँ डालेंगे? यहाँ पे डालिएगा, सेकेंड लास्ट या फिर यहाँ पे. ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इफ पॉसिबल यू कैन शिफ्ट दिस CH3. इफ पॉसिबल यू कैन शिफ्ट दिस CH3. एक और बन जाएगा इससे, दिस इज अनदर. अब इसके बाद अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वापस ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द सेम सेकंड स्ट्रक्चर. ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको? थर्ड n-2. n-2 में आप 2 केस कर सकते हैं, 2 ब्रांच ऑफ 1 कार्बन या फिर 3 ब्रांच, सॉरी 3 ब्रांच बोल रहे हैं, 1 ब्रांच ऑफ 2 कार्बन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 ले लें, यू हैव टेकन 4 हियर. ठीक है, 4 में अब क्या करना है आपको? आइदर यू हैव 1 CH3 यहाँ, दूसरा CH3 यहाँ. दिस इज वन ऑफ द आइसोमर, और व्हाट यू कैन डू, 2 CH3 हियर. ये स्ट्रक्चर आपका इस स्ट्रक्चर के बराबर हो जाएगा.
सो आई थिंक यू हैव टू टेक, यहाँ पे आपके पास बस एक ही बनेगा, 2 CH3 अलग अलग जगह पे, ठीक है। देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स जिसको आप फॉलो करके ना, लाइक एल्केन्स में आप एक एक रूल नहीं है, आपको चेंज कर करके देखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट लार्जेस्ट नंबर दैट दे विल आस्क इज C5H12, ठीक है। तो C5H12 के जितने भी आइसोमर्स बनते हैं उसको प्लीज एक बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कम से कम आप लोग जब एग्जाम में करते रहे तो आपको ये ना लगे कि पहली बार कर रहे हैं, ओके ना। नेक्स्ट इज, एक आपका सवाल जो जनरली आ सकता है, दैट इज फाइंड all possible monochloro products formed by, कोई आपको यहाँ पे वो दे देंगे स्ट्रक्चर, कोई एल्केन दे देंगे ना, some alkane will be there. Find all possible monochloro products formed by dash, some there will be some doing here, okay. Then you have alkenes वाला केस ध्यान रखिएगा, there is another with alkenes. Alkenes में क्या होता है, alkenes में you have two different ways. पहला जो आपके पास very important, that is hydrohalogenation. Hydrohalogenation में yes, after making the structures you will get to know the number of isomers. आप याद नहीं कर सकते इसको, ठीक है। 5 तक तो आप रट के जा सकते हैं, बट देयर इज नो पर्टिकुलर, मतलब इस तरह कुछ पैटर्न नहीं है। There was a very good graph जिसमें उन्होंने बताया होता like how many isomers are there for, शायद this is the one, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ एल्कीन्स, ओके, नंबर ऑफ एल्कीन्स मान लीजिए अगर आपके पास 1 है देन देयर इज 1 आइसोमर, यहाँ पे भी अगर 2 है तो 1 आइसोमर, 3 में भी 1 आइसोमर, 4 में आपके पास 2 आइसोमर, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 18, 35, 75, 11 कार्बन आते आते आपके पास कितना आ गया, 160, समवेयर अराउंड 160, ठीक है। सिर्फ ये किसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब हम यहाँ पे स्टेरिक की हम बात ही नहीं कर रहे, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे। तो यू हैव 159 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर व्हेन यू हैव 11 कार्बन एटम्स। तो 5 तक आप याद कर लीजिए, 5 में आपके पास 3 बनता है, एक आपके पास नॉर्मल ये हो जाएगा और एक आपके पास होगा ये, एंड देन यू विल हैव वन व्हिच इज दिस, ठीक है। ये 3 होता है आपके पास व्हेन यू हैव 5 कार्बन एटम्स। चलिए इसको हटाइए, वी वर टॉकिंग अबाउट hydrohalogenation. So when you add HX, तो negative part on less carbon, this is Markovnikov's rule, ठीक है। सिर्फ HBr के केस में आप क्या कीजिएगा, you can have peroxide, HBr and peroxide, less carbon नहीं होगा, less hydrogen होगा, my bad, HBr and peroxide इस केस में negative part on more hydrogen. This is known as anti-Markovnikov rule, peroxide effect, also known as Kharash effect, ठीक है। This is for hydrohalogenation. This is for hydrohalogenation. याद रहेगा सबको, yes or no, B and me. Negative part on less hydrogen, Markovnikov. Negative part on more hydrogen, anti-Markovnikov. Negative part on less hydrogen. ये आप याद रखिए, peroxide की केस में negative part on the more hydrogen. This happens via carbocation mechanism, and this happens via radical mechanism. ठीक है, तो radical का formation, free radical is formed. That is why we use peroxide, and we can also use what? We can also use another
radical generators such as H nu, such as what? Sunlight. ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं इसलिए on reaction with HBr. Okay, so next you have addition of halogen. You have also when you add, if you have some, for example, Br2, if you have alkene and you add X2, then you will get CX and you will get CX. Okay, this is known as what? Vicinal dihalide, known as vicinal dihalide. ठीक है, अब आ जाइए जो कि इंपॉर्टेंट है, हालोजन एक्सचेंज. हालोजन एक्सचेंज यहाँ पे आता है आपका हालो एल्केन एंड हालोरीन का पहला नेम रिएक्शन और दूसरा नेम रिएक्शन. यू हैव फिनकेल्स्टीन. ठीक है, यू हैव व्हाट? फिनकेल्स्टीन. फिनकेल्स्टीन में आप बताइए फिनकेल्स्टीन में क्या करना होता है? व्हाट? हालोजन इज एडेड. हमने इसको ऐसे याद किया था, दिस इज व्हाट एफ है ना, दिस इज व्हाट एफ. एफ आपका फर्स्ट होता है, उसका उल्टा क्या होगा? फ्लोरीन फर्स्ट में आता है, आयोडीन उसका उल्टा होगा, सो आयोडाइड इज एडेड है ना, आई इज एडेड. अगर आई ऐड करना है आपको तो रिएजेंट क्या होगा? सोडियम आयोडाइड. ठीक है, सोडियम आयोडाइड. जहां सोडियम है आपके पास, so you are not going to use water because you have sodium, and that is why we will use what? Acetone. So simply speaking, if I have Cl like this in the presence of sodium iodide and acetone, acetone is a solvent, it is not acting as a reagent. Okay, what are we going to get? I'm going to get iodoethene. Okay, and also you can use Cl or Br. This case में NaI, acetone, and then you will get sodium iodide. Finckelstein के बाद होता है, there is second one which is known as Schwarz. स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग? F is added है ना, फ्लोराइड ऐड होता है, and that is why we use metal fluoride. ठीक है, what do we use? We use metallic fluoride. metallic fluoride में आपके पास बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं. एक चीज आप याद रख लीजिए, AgF, silver fluoride, and you can also use HgF2. Just a second, my dad is calling. Assalamu alaikum. Okay, so this is what? Schwarz reaction. So we have done two reactions, Finckelstein and Schwarz. ठीक है, याद रखिएगा. And then right next, अच्छा यहाँ पे आप reaction लिख लीजिए. You can use Br, AgF, and fluoride will be added. Okay, what else do we have? Then there is what? Haloarenes की preparation, right? Haloarenes की preparation के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? For example, if you have benzene, ठीक है, benzene के साथ आप क्या कर सकते हैं? You can do bromination or chlorination. If you add Br2 in the presence of FeBr3, you are going to get Br. If you have benzene and you add Cl2, then you are going to get chlorine. अगर आपके पास plus M group हो, for example, you have toluene, and then you add Cl2 in the presence of AlCl3, then in that case you are going to get CH3Cl, as well as you are going to get a para substitute, which will be the major product CH3Cl. Okay, so these are the two products that you are going to form. Next है आपके पास
एक रिएक्शन जो कि बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन. व्हाट इज दैट रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन. ओके, But the above part was substitution reaction. Then. हाँ, electrophilic aromatic substitution of benzene and benzene derivatives. Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction uses benzene disonium salt, which is formed by the reaction of aniline, that is benzene attached with NH2. In the presence of NaNO2 and HCl, it forms ONO, nitrous acid, NaNO2 and HCl. You get N2 plus and Cl negative. ठीक है, N2 plus and Cl negative. अब इससे आपके पास तीन रिएक्शन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. You can use cuprous chloride Cu2Cl2 and you will get chlorobenzene. You can use cuprous bromide and you will get bromobenzene. You can use warm Ki and you will get iodobenzene. But only these two are what? Sandmeyer's reaction. Yeah, this is also preparation of benzene disonium salt. This reaction is preparation of benzene disonium salt. Okay. Disonium salt में भी हमने ये बताया हुआ Sandmeyer reaction का. ठीक है. You can also, there is one more Sandmeyer reaction that can be done, which is known as cuprous cyanide. वहाँ पे use करते हैं. Okay. But these two are important Sandmeyer reaction. अगर आपको एग्जाम में है Sandmeyer reaction तो आप cuprous chloride ही लिखिएगा. Okay. We'll write about cuprous chloride. Okay. चलिए next we have the chemical physical properties. आप लोग देख लीजिएगा. Physical properties में कुछ खास नहीं है. You have एक जो important सवाल है, that is dipole moment of haloalkane and haloarine में HH लिख दिया हमने. Dipole moment of haloalkane is greater than that of haloarine. ठीक है, is greater than that of haloarine. Chemical properties. In chemical properties, we have three reactions mainly. You have nucleophilic substitution reaction, then you have elimination reaction, and then you have the reaction with metals. Okay, there are three types of reaction. Nucleophilic substitution में, you know, there are two parts. Nucleophilic substitution, it can be either SN1 or it can be either SN2. Okay, the big barrier in SN1 is what? It is stability of carbocation. और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है, प्लस एम एंड रेजोनेंस. ठीक है, अगर आपके पास रेजोनेंस हुआ तो सबसे ज्यादा आपके पास स्टेबल होगा. रेजोनेंस एंड प्लस एम आर सेम थिंग एंड देन यू हैव प्लस आई. ओके, सो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ SN1, इन दिस केस अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बेंजीन and then you have CH2 and here you have chlorine versus something like this, then this will be more faster in SN1 because it is what? It is resonance stabilized. SN2 में जो आपके पास मेन क्राइटेरिया जो बिग बैरियर बोलते हैं, that is steric hindrance. So in this case, if I talk about two things, you have CH3Cl versus you have something like this, which is attached to Cl. In this case, the less hindered will be more reactive towards SN2. Okay, this is for different types of alkenes. And this SN1
it occurs via carbocation mechanism. That is why there is racemization, and it forms what? Racemic mixture. Racemic mixture में we have 50% retention and 50% inversion. In SN2, there is complete inversion as nucleophile attacks from backside. ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है. That is why there is a probability of attack from both. This p orbital is vacant and the nucleophile can attack either from the top or from the bottom, leading to 50% retention and 50% inversion of the configuration. ठीक है. अच्छा, एक और चीज SN1 में, this is the rate is only proportional to what? The alkyl halide. In this case, the rate is dependent on the alkyl halide as well as the nucleophile. Now, if I talk about general SN and if I talk about the rate of reaction for different halogens, then in this case, what we are going to see, we are going to see that Ri will be fastest because the breaking of Ri is easiest and it is what it is, the weakest bond, followed by RBr and then followed by RCl and then followed by RF. So if I have something like this, Br versus we have Cl, then in this case, the Br will be faster. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys, all of you. Yes, sir. Okay. I hope you got a slight revision of the whole thing. Then you have the elimination reaction. Okay. Elimination reaction में कौन सा rule use होता है बताइए जरा please. ZCF rule. ZCF rule. Yeah, very good. Elimination में ZCF rule या फिर इसको क्या बोलते हैं? ZCF rule. हाँ. लिखते देखिए अब ZCF भी समझना चाहिए, ठीक है, टीचर्स को ZCF भी समझना चाहिए. आपके स्कूल में क्या पढ़ाया था सबको? ZCF या ZCF? बोलने में फर्क है, रूल तो वही है ना. ZCF उसको बोलते हैं, लिखते ZCF है, ठीक है. It is the ZCF rule. What is the ZCF rule? What does it say? That the major product is more substituted. Major product. More substituted alkene is major product. More substituted. That alkene is major product. ठीक है, चलिए इसमें से बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? A or B? Which is major? Okay, Sarah. Okay, Samara. ठीक है, you just need to see the number of branches coming out of the double bond, है ना. यहाँ पे एक substituent, दो substituent, तीन substituent, यहाँ पे एक substituent and दो substituent बस. So which is major? Here we have three substituent. That is why this will be major product. Okay, and this is also known as what? It is also known as beta elimination. Beta elimination, and beta carbon should have one hydrogen. ठीक है, एटलीस्ट इसके पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन कम से कम होना ही चाहिए. एक
चलिए ठीक है। एंड what else? रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में आपके पास क्या है, Rx प्लस Mg, तो ये Mg बस इस बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, यू विल गेट R MgX। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, फातिमा बताएंगे। बाकी दो मेटल के अब बताइए फातिमा, जो आपने पूछा था। बाकी दो रिएक्शन है ना, कौन कौन से रिएक्शन है हालो अल्केन हालोरीन में, बताइए। मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ एक रिएक्शन का क्या नाम है, भूल गई फातिमा। यस फातिमा। Woods. हाँ, क्या रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या यूज होता है, हालो अल्केन या हालोरीन? Halogen. हाँ, इसमें क्या यूज होता है, हालो अल्केन। यू हैव Rx, 2 moles of Rx प्लस सोडियम। सोडियम है तो क्या यूज करेंगे, ड्राई ईथर, नो वाटर। ड्राई ईथर इज सॉलिड या लिक्विड या गैस, इट इज लिक्विड without any water molecule, and I will get the double the number of carbon atoms. ठीक है, and the bond will be something like this. अगर आपके पास क्लोरीन है यहाँ पे and you are using 2 moles plus Na, then ये जो बॉन्ड होगा, this will be between the carbons that had halogen. यहाँ पे आप दो कार्बन इस तरह से बना दीजिए और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, बिकॉज दीज टू कार्बन एटम्स हैड दी हैलोजन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, सेकेंड इज फिटिग। फिटिग रिएक्शन इज व्हाट, बिटवीन हैलोरीन्स। You have Cl plus Na, dry ether, one benzene ring attached with another benzene ring. Then we have Woods fatigue. Woods fatigue. We'll get alkyl benzene from here. ठीक है, उसके बाद हालोअल्केन, सॉरी, उसके बाद हालोअरीन के जो रिएक्शंस है ना, you have halogenation, then you have what, nitration, sulfonation, then you have alkylation and acylation। वो सारे रिएक्शंस को आपको याद करना है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, एक याद रखना चाहिए, halogen is deactivating but still gives ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर आना चाहिए, व्हाई डज इट गिव ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। ओके, देन व्हाट एल्स डू वी हैव, एंड देन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, तो नाइट्रो ग्रुप increases the reactivity of nucleophilic substitution reaction in haloarine. Why? अच्छा, एक और चीज बताइए, रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन चार्ट में बताइएगा प्लीज। व्हाट रिएजेंट डू वी यूज फॉर एलिमिनेशन? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? यस, अब्दुल रहमान करेक्ट, समायरा करेक्ट। बाकी लोग प्लीज बताएं, हनीफा, हिश्मा, किंजा, नवाल, सारा, समायरा। समायरा ने आंसर कर दिया जी।
वेरी गुड, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको that this is what alcoholic KOH। और अगर हम aqueous KOH यूज करेंगे then it will convert to alcohol, ठीक है। then there is important question regarding AgCN and KCN, AgNO2 and KNO2, ठीक है। एक चीज हमने इसको ऐसे याद कर रहा था, if Ag then bond with नाइट्रोजन, या फिर then bond is CN bond होता है जब भी आपके पास Ag हो, then bond is CN, ठीक है। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होगा rather than CC बॉन्ड या फिर CO बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन इस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है आपके पास, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। दोनों में किस में बॉन्ड होता है, कार्बन का बॉन्ड जो होगा R का बॉन्ड, देन RN लिख लीजिए आप, CN की वजह से आप साइनाइड कहीं ना समझ लगे, RN लिख लीजिएगा। इफ Ag then bond is RN, ओके। इनके बाद बाकी कुछ और चीजें होंगी यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसके बारे में आपको पढ़ना, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना, CHCl3, एंड व्हाट एल्स, देन CHI3 एंड CCl4। एक लास्ट है जो आपका क्या है, DDT, ठीक है। तो इन सब के आप क्या पढ़ लीजिएगा, यूजेस पढ़ लीजिएगा। DDT का ज्यादा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। DDT को नोबेल प्राइज वगैरह मिला था जब बना था। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज किसके लिए यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। CHI3 के क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक, इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बिकॉज इट गिव्स फ्री आयोडीन, ठीक है, दैट इज व्हाई इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। देन यू हैव क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को किस लिए यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को किस लिए यूज किया जा सकता है, बताइए। सुन करने के लिए ना, एनेस्थेटिक, CID नहीं देखते आप लोग, reagent, ठीक है, it can be used as anesthetic reagent। and then you have what, dichloromethane। डाइक्लोरोमीथेन को किस वजह से यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर। जो नेल पेंट्स रिमूवर होता है ना, दिस इज पेंट रिमूवर।